Maths book, children. Page 22. Page 22, children. Write classwork. Write today's date. Ma'am, what is page number? 22. 22. Yes. Classwork. Today's date. Ma'am, page number क्या? Please ask me this question in English, Myra. Ma'am, please ask me, ma'am, what is the page number? Ma'am, please ask me what is page number? So sweet. Page number is 22. And you have to say, ma'am, please tell the page number. Okay? Good girl. Page 22. Classwork. Today's date. When we had started this maths book, we had done a lot of things, right? Now, and we have also done numbers 1 to 10 in the maths book also. So we know that after 1 comes 2, 3 comes after 2, 4 comes after 3, 5 comes after 4. Similarly, 4 comes before 5, 3 comes before 3, 2 comes before 4 comes, 3 comes before 4, 2 comes before 3. यानी before का मतलब जो पहले आता है और after का मतलब जो बाद में आता है. Right? So let us see. The first one, what comes before? The first one has been done for you. 2 comes before 3. Okay, now Izan, switch on your mic, child. Izan, are you there? Yes. What will come before 5? This one. What will come before? What will come before 5? 4. Yes, very good. Write 4 over there, children. Yatharth Shukla. Next one. What will come before 9? Yatharth, what will come before 9? I can't hear you, beta. You have to switch on your mic and your camera both. Switch on your mic also. Very good. Write 8 over there, all of you. Nishkarth, what will come before 2? 3. 1. पहले सोच लो क्या बोल रहे हो. 1. Okay, write 1 over there, all of you. Who has joined with the idea of Shailin Gupta? Ma'am, this page number. Who has joined with the idea of Shailin Gupta? Ma'am, page number. Who has joined?
अक्षय गुप्ता मैम, अक्षय गुप्ता। अक्षय गुप्ता कितनी आईडी से ज्वाइन करते हैं? आई नीड ओनली वन आईडी प्लीज, बिकॉज एवरी टाइम आई कांट कीप ऑन आस्किंग। आप एक आईडी डिसाइड कर लीजिए और उसी से ज्वाइन कराइए। मैम, विदुषी, can't you see I am Vidushi, can't you see I am talking to someone? Where are your manners, child? Don't you know when two people are talking, तीसरे को नहीं बोलना चाहिए बीच में? Akshay, switch off your mic. Vidushi, page number 22. Okay. Veronica, what will come before 8? seven. Yes, very good. Please write 7 over there. Havira, what will come before 10? Havira Abbas. Havira Abbas, what will come before 10, beta? I think she can't hear me. What will come before 10, beta? टेन के बाद मैम 9। बाद 10 के बाद 9? बिफोर की हिंदी क्या होती है? Havira, what is Yes, ma'am. beta? What is the meaning of before? Then Parents, please have mercy on your child and have mercy on me also. आप मत आंसर कीजिए, उसको कोशिश तो करने दीजिए प्लीज। 9 मैम, 9। ओके, 9 क्यों आएगा? बिफोर का मतलब मालूम है हावेरा? नहीं Yes, ma'am. क्या होता है बिफोर का मतलब? बेटा बुक से देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा बिफोर का मतलब क्या होता है। ओके, तुम्हारा आंसर सही है। तुमने 9 जो कहा है वो आंसर सही है, बट तुमने क्यों कहा है आंसर, ये मुझे बता दो बेटा। बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है? तुमने 9 इसलिए बताया है कि 10 से पहले 9 आता है। ओके, आंसर तुम्हारा सही था। यू हैव टू लर्न द मीनिंग्स ऑल्सो। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। आ गया समझ में बेटा? हाविरा, आ गया समझ में? ओके बेटा, राइट 9 over there. You've all written 9 over there, children. Achint, what will come before 6? Achint, what will come before 6? 5. 5. Very good. 5. Write 5 over there, children. Next, Havira, please switch off your mic, child. Next exercise. What comes after? What? Yes. मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है। बेटा चार्जिंग पॉइंट के पास बैठा करो, क्योंकि क्लासेस तो सारे अटेंड करने हैं ना। क्लासेस तो सारे अटेंड करना है, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट, चाइल्ड। Havira, switch off your mic. Akshat, tell me the meaning of after, beta. आफ्टर माने बाद में। बाद में, वेरी गुड। ओके, क्लास की समझ में आ गया आफ्टर की मतलब बाद में होता है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? मैम, ओके, सो सईदा, आफ्टर मतलब बाद में। नीचे पहुंच जाओ, नीचे पहुंच जाओ। कौन पढ़ा रहा है?
एंड किसका माइक स्विच्ड ऑन है? प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स चिल्ड्रन. कुछ आप माइक नहीं करा Okay. First one, 3 comes after 2 has been done for you. Suknur, what will come after 5? Yes. Suknur? 6. Very good. Write 6 over there. Ishanvi, what will come after 8? 9. Very good. Very good, Ishanvi. Adya. Adya. Adya, what will come after 3? What will come Yes, after, ma'am. what will come after 3, beta? 4. Very good, Adya. Shayan. Nabiha, your brother is also in the same class, beta? नबिहा, तुम दोनों भाई बहन एक ही क्लास में हो? यस मैम. नबिया और अब्दुल्ला मैम कजिन्स हैं. मैम अब्दुल्ला के नेटवर्क नहीं आ रहा. ओके, देन प्लीज इन्फॉर्म कर दी ताकि मुझे ये ना लगे कि इस बच्चे को तो भी मैंने कहीं और देखा तब मैं यहाँ देख रही हूँ. जी. So, नबिहा जी मैम. सॉरी मैम. मैम it's क्लास okay. के बीच में मैम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती. नहीं, it's okay. Abdullah and Nabiha are cousins. They can attend the जी. class together. No problem at all, right? I just थैंक यू. okay. Nabiha, what will come after 9? Nabiha, where are you? Gone again. Nabiha. मैम 9 के बाद 10. Okay, very good. 9 के बाद 10. Write 10 over there. Vidushi. Thank you, ma'am. Vidushi, what will come after 1? Ma'am 2. Good. Ekagra, what will come after 4? 9. Very good. 5. Now we have done before, we have done after. यानी हमने वो numbers करे हैं जो पहले थे और हमने वो numbers लिखे हैं जो बाद में थे. Now इन दोनों के बीच में भी numbers आते हैं and that is known between. In between, between का मतलब होता है बीच में, right? Between का मतलब होता है बीच में. So first one, 1, 3 and 1 और 3 के बीच में 2 comes. 2 comes between 1 and 3. Arslan, switch on your mic. Arslan, what will come between 2 and 4? 2 and 4. Arslan, what will come between 2 and 4? 3. Very good. Right over there. Varuna, Myra Tendon. Next one. What will come between 8 and 10? 9. 9. Who answered for you, Myra? किसने बताया आंसर? हाँ. किसने बताया आंसर? आप प्लीज कैमरे पे आ जाइए. Can I please see you on camera? Let me see who I'm teaching. मैम मायरा के पास बुक नहीं है. तो ये बता दीजिए प्लीज़. अगर बुक नहीं है तो भी मैथ्स इतनी सिंपल है ये कि बच्चा अपने आप सोच सकता है ना. जब मैं सिंपल Sorry, सिंपल सा क्वेश्चन उससे पूछ रही हूँ, व्हाट कम्स बिटवीन 8 and 10, सो लेट हर आंसर, लेट हर थिंक ऑन हर ओन. मैथ्स मीन्स थिंकिंग ऑन योर ओन. प्लीज़ डोंट से सॉरी बिकॉज इट मेक्स मी फील बैड. ऐसा मत करिए कि अब मुझे बार बार आप लोग को टोकना पड़े. ओके बेटा. सो मायरा, बिटवीन 8 and 10 कम्स 9.
Nine. Okay. Viraj, what will come between 5 and 7? Viraj, what will come between 5 and 7? Six. Loudly, loudly, Viraj. तेज बोलो मैम। Six. ओके उसको लाउडली का मतलब समझने दीजिए, तभी वो जब समझ पाएगा कि जब मैम लाउडली बोल रही है तो उसका मतलब होता है तेज बोलना. ओके, राइट 6 ओवर देयर चिल्ड्रन. Abdullah, what will come between 4 and 6? Abdullah, what will come between 4 and 6? Six, seven. Six, seven. What will come between 4 and 6? Seven, ma'am. Six, seven, ma'am. क्यों 6 के बाद तो नहीं पूछा है मैंने पूछा है what will come between 4 and 6. Six. Seven, six. Who is helping you, Abdullah? कौन तुम्हें आंसर बता रहा है? Two, ma'am. No, ma'am. नो मैम, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही. नो मैम. Abdullah, what will come between 4 and 6? Only Abdullah has to answer. No one should help him, please. What will come between 4 and 6, Abdullah? Abdullah, 1 से 10 तक नंबर्स Yes, बताओ. ma'am. नंबर्स बोलो 1 से 10 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, सो 4 के बाद कौन सा नंबर आया? 5, और 6 से पहले कौन सा नंबर आया? 5, तो 4 और 6 के बीच कौन सा नंबर आएगा? 5, हाँ, तो फिर 6 और 7 क्यों कह रहे हो बेटा? हमको बिटवीन नंबर चाहिए ना. व्हाट कम्स बिटवीन मतलब बीच में. सो नाउ व्हाट नंबर विल कम बिटवीन 4 and 6, Abdullah? 5, Very good. 5 will come between 4 and 6. Okay. Akshay, what number will come between 6 and 8? Akshay Gupta, what number will come between 6 and 8? seven. Good, very good. Right over there, 7. Ma'am, number 10 was me. And Ekagra, what number will come between 3 and 5? 4. Very good. That is how you should be answering, children. Good. Okay, now move on to the next page. Greater than and less than. Greater का मतलब ज़्यादा होता है, लेस का मतलब कम होता है. ओके, ग्रेटर मीन्स मोर, लेस मीन्स कम. ठीक है, तो अब हमको दो नंबर्स के बीच में सीखना है कि जब हमको साइन बनाना होगा तो हम क्या साइन बनाएंगे. लेट अस सी. नाउ वी ऑल नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 pencil, 2 pencils, 2 is more than 1, 2 pencils, 3 pencils, 3 is more than 2, right? तो अब देखो, Kini has 4 apples and Krish has 2 apples. बुक में दिख रहा है सबको? Can you all see in the book, children? Kini has 4 apples, Krish has 2 apples, right? 4 is greater than 2. ये तो हम लोग को सबको मालूम है ना, कि दिख रहा है ना 4 एप्पल्स जो हैं
4 एप्पल्स जो हैं वो 2 एप्पल्स से ज़्यादा हैं. 4 apples are more than 2 apples. The sign for greater than is ऐसे करा हुआ साइन है V. बट जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ द ब्रॉडर, द चौड़ा वाला साइन, जो खुला हुआ मुंह है वो बड़े वाले नंबर की तरफ होता है. द ब्रॉडर एंड पॉइंट्स टुवर्ड द ग्रेटर नंबर. 2 इज़ लेस देन 4. 2 जो है दिख रहा है, 2 apples are less than 4 apples. So 2, the sign for less than is उसका जो pointed end है that will be towards the lesser number. The pointed end points towards the smaller number or the lesser number. Then there is one more sign, equal to. Equal to मतलब 4 apples in one hand, 4 apples in another hand, means दोनों equal number है, so both are same. For the same number we write the sign equal to. Greater than में the sign is opening towards the bigger number. Less than में the sign is closed towards the smaller number. Equal to are 2 lines which tell us दोनों numbers equal हैं. Out of the 4 apples, Kini gives 1 to Krish. Now, Kini के पास 4 थे, Krish के पास 2 थे. Kini ने 1 Krish को दे दिया. तो now both of them have 3 apples each. दोनों के पास 3 apples हैं. So now both have the equal number of apples. दोनों के पास equal number of apples हैं. So the sign for equal to is, as we can see, or we write 3 is equal to 3. Okay, so turn the page now, children. Page 24. Write classwork, write today's date. Write classwork, write today's date. The first one, Yatharth, why are you crying, child? The first one has been done for you. There are 6 lollipops in the first box and 2 in the next box. 6 is the greater number, so 6 की तरफ it is. मैम कौन सा पेज खोलना है? Veronica, I said turn the next page. What does turn the next page means? It means page number 24. And you can ask me this question in English, Veronica. Please ask me, ma'am, which page to open? Veronica, switch on your mic. Veronica, switch on your mic. Ask me, ma'am, which page to open? मैम आप हमसे नहीं पूछ रहे. Laiba, please stop all this in class. How can I keep on asking you? And please don't make your child say all this in class. Veronica, switch on your mic, child. बेटा आपने माइक खोला, Veronica? Yes मैम. Okay, ask me, ma'am, which page to open? मैंने 24 पेज खोल दिया. Beta, why are you talking to me in Hindi? You have to ask me this question in English. I want you to learn to ask me this question in English. Ask me, ma'am, which page to open? Okay मैम. Ask me. पूछो मुझसे. Ask me, please open. No, Veronica.
जस्ट जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ केवल वही क्वेश्चन पूछना. Understand. Veronica, say ma'am which page to open. Ma'am, I will try and understand. You can understand. See, you're talking in English. That means you can understand. You have to open page number 24. Okay, Akshay? Okay, ma'am. Okay. Instead of asking ma'am कौन सा page खोलना है, please ask me, ma'am, please tell me the page or ma'am which page to open. Right? Try to talk in English, children. Ma'am, I am Okay. page. Page 24. Right? Okay, classwork. The ये काउंट करके यहाँ लिखना होगा, फिर से काउंट करके यहाँ लिखना होगा, फिर ग्रेटर देन जो होगा उसकी तरफ. तो आप पढ़ा रही हैं तो मेरी ज़रूरत है. Am I required to teach अगर आप ही पढ़ा रही हैं? Okay, next one. Yatharth Shukla, switch on your mic, child. Yes, ma'am. Okay. The next one. Count how many are there in the first box. Box. How many bulbs are there in the first box, child? Box. कितने? 6. Again, am I teaching the parents or I'm teaching the child? 6. Which box are we on, Yatharth Shukla? 6. यथार्थ शुक्ला, which box are we on? हम किस बॉक्स की बात कर रहे हैं? सईदा, just tell me which box are we on, child? Okay, Saida, I'm telling you again. How many bulbs are there in the first box, Saida? Page 24. The first example has been done for you. Please go on to the next example. Count how many bulbs are there in that box. Parents, कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा? The child knows how to count. Let her count, please. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And in the next box? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Which number is greater, beta? 7, 8. Okay. Which number is greater? 8. Okay. So sign बनाओ उसमें. Akshat, the next one, please. The first one is already done for you, Saida. You have to do the next one, child. Akshat, the next one, child. 9. And the 9. next one. 4. Very good. So, which number is greater? 9. Make the sign, please. Laiva, the next one. Yes, ma'am. The next one. Count how many are there in the first box. 1, 2, 3, 4, 5. You are not even paying attention which box we are on, Laiba. You are not even paying attention which box we are on. Suknoor, the next one, please. Yes, ma'am. The next one, child. How many in the first box? 5. Which box are we on, child? गलत गिन रहे हो आप भी. Pashvi, 1, 2. Pashvi, Yes, ma'am. how many in the first box? 1,
Then 9. You all are not paying attention, children. 9 has already been done. We are on the next box. Then 9. No, children, no. Okay, children, complete this work on your own because you all are not paying attention and your parents are doing your work, right? So, complete this work. I will take this work when I